हेलो स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज मंगलवार जून की 1 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। Hello and namaste from us residents of Madhuban to all the jewels of the Brahmin clan who are spinners of the discus of self-realization. Today is Tuesday the 1st of June and the morning class are listening to Bapdada's Murli. गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी, किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। For whom does time pause? For whom does time stop? Do what you need to do now, because this time is passing by. This time is passing by. जो ने गीत सुना बहुत हो गई, अब थोड़ी रही। Om Shanti. The children heard the song that much time has gone and a little remains. श्रीमत जो कहती है, क्या कहती है, मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, ऐसे कहती है नहीं। Srimat says, what does Srimat say? That make effort to constantly remember me alone. This is what it says, doesn't it? किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। Who said this? Shiv Baba said this. बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य की जो आत्माएं हैं, वो जब शरीर लेती है तो उनका नाम शरीर का पड़ता है। It has been explained to the children that the soul that human beings have, when that soul takes a body, the name falls upon the body. पीछे क्या होते हैं, शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया तो दूसरे शरीर का नाम पड़ा। What happens at the end? The soul leaves that body, takes another body, and then the name falls upon that body. फिर तीसरा शरीर लिया तो तीसरे का नाम पड़ा। It then takes a third body, and the name falls upon that third body. ऐसे भिन्न भिन्न नाम हर एक जन्म में मिलता है, ठीक है? In this way, you get different names in each birth. That's right, isn't it? आत्मा का नाम नहीं बदलता है, न शरीर का नाम बदलता है। The name of the soul doesn't change, but it's the name of the body that changes. ये तो बच्चों को समझाया गया है। परमपिता परमात्मा शिव वो तो घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलते हैं ना। It's been explained to you that the Supreme Father, the Supreme Soul, doesn't take birth again and again, right? तो एक ही बार आते हैं, जिसको ही पतित पावन कहा जाते हैं। He just comes once, the one that is known as the purifier. जरूर पतित पावन का कोई नाम तो होगा ना। Now, that purifier would definitely have a name. श्री पतित पावन तो देखो क्या कह देते, पतित पावन, फिर कहते सीताराम। So what did they say? Hey, purifier, and then Sitaram.
अभी सीताराम का भी अर्थ समझना चाहिए. Now, they should understand the meaning of Sitaram, सीताओं का राम, the Ram of the Sitas. सीताएं कहा जाता है भक्ति को. Devotees are known as Sitas. अच्छा, उनका है भगवान साजन राम, फिर जिसको कह देते हैं. Theirs is the God, the beloved, the one that they then call Ram. तो तुम बच्चे तो जानते हो अच्छी तरह से कि इन सब भक्तों का, इसमें बच्चियां भी आ जाते हैं, बच्चा भी जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, बुढ़े भी जाते हैं, सभी भगत किसको याद करते हैं? भगवान को. And the children know very well that for all of the devotees, and within that comes the males, comes the females, comes the young, comes the old, everyone's one is God. अगर सभी भगत भगवान हैं तो फिर याद किसको करेंगे? So then, if all devotees are themselves God, whom would they remember? इसलिए सभी भगत भगवान को याद करते, एक को. Now, all devotees remember God, that one. सभी कहो, साधना कहो, प्रार्थना कहो, करेंगे तो एक को ना. Whether you call it some type of spiritual endeavor, whether you call it some type of prayer, they're doing it all aimed towards the one, are they not? सबका बाप तो एक है, सबका Because the Father of all is one, गति दाता एक है. the bestower of salvation for all is one. अंग्रेजी में भी बच्चों को समझा गया, कहते हैं सबका लिबरेटर एक है, फिर सबका गाइड भी एक है. In English, they use the term that everyone's liberator is one, and then they say that everyone's guide is one. अंग्रेजी में भी उसको कहा जाता है लिबरेटर और गाइड. So in English, they call it liberator and guide. तो बराबर सभी पतितों का पावन करने वाला भी एक है. पावन. So definitely, the one to make everyone pure from impure is one. करके पीछे गाइड बन करके आत्माओं के ले जाने वाला भी एक है. After making them pure, the guide to take everyone back is also that one. सभी सज्जनिया का साजन भी एक भवन. The beloved of all the lovers is that one. यानी भक्तों को चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो तो भक्ति कह देते हैं सभी. Baba has explained, hasn't he, that whether the devotee is male or whether they are female, they are all lovers. भगवान को याद करते हैं, ये भी कहते हैं कि गॉड फादर परम पिता. Because they all remember the one and they say God, Father, the Supreme Father. आत्मा, परंतु उनको पहचानते नहीं है. The Supreme Soul. However, they don't know who He is. इसलिए है कब आते हैं हम पतितों को पावन करने से तो जरूर है जब सारी दुनिया पतित होंगी जर्जरीभूत अवस्था में तमोप्रधान, तभी तो बाप आएंगे ना. बाप आकर के ही कहते हैं. And the Supreme Soul, and they don't know when He would come. He would definitely come when all of the world, the human tree, has become impure, decayed, in its tamopradhan state. सारा ये झाड़ मनुष्य सृष्टि का जर्जरीभूत हो जाते हैं, तमोप्रधान हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं.
अभी पापा आत्माएं बन जाते हैं, सभी के लिए कहते हैं ना बच्ची, तो सबक. And it's the Father who comes and says that when this whole tree of human beings becomes tamapradhan, impure, corrupt, and everyone becomes a sinful soul, because this is for everyone, isn't it, daughter? Everyone means all children. तुमको तो समझा दिया है कि रावण ने आकर करके हमारे बच्चों को जला दिया, सुना है? And it's been explained to you, children, that Ravan has come and incinerated all of my children. You've heard of the story, haven't you? लिखा हुआ है कि सागर के बच्चे सभी भस्मीभूत हो गए थे. That the children of King Sagar had been incinerated. दुनिया पतित होंगी जर्जरीभूत अवस्था में तमोप्रधान, तभी तो बाप आएंगे ना. बाप आकर के ही कहते हैं, जब सारा ये झाड़ मनुष्य सृष्टि का जर्जरीभूत हो जाते हैं, तमोप्रधान हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, अभी बाप आत्माएं बन जाते हैं, सभी के लिए कहते हैं ना बच्ची. And it's the Father himself who comes and says that when this whole human world tree becomes decayed, becomes corrupted, becomes tamapradhan, and all souls are sinful, because Baba is talking about everyone, that is, everyone means all children. And it comes and gives salvation to everyone, and everyone means all children. तुमको तो समझा दिया है कि रावण ने आकर करके हमारे बच्चों को जला दिया, सुना है? And it's been explained to you that Ravan came and incinerated my children. कथा में लिखा हुआ है कि सागर के बच्चे सभी भस्मीभूत हो गए थे. Have you heard the story of how King Sagar's children were all incinerated? उनके ऊपर आकर के वर्षा की तो जागू थे. And then a shower came down upon them, and they all came back up alive. ये है ना बराबर कि ये इस समय में सभी भस्मीभूत हैं. And it's accurate now for this time that everyone has been incinerated. किसने किया है? काम शत्रु ने. Who incinerated everyone? It's the enemy of lust. जला दिया है, क्योंकि काम से ही पैदा होते, विख से ही ये शरीर सबको मिलते. Everyone has been incinerated because everyone is, a body is born through vice, through poison. तो ये तो बाप बैठ करके समझाते हैं ना बच्चों को. बेसमझ बच्चे हैं तब तो बाप आते हैं और कहते भी है तुम कितने बेसमझ बन गए हो. So it's the Father that has explained this to you. When you are without any sense, it's the Father who comes and tells you that, children, you've become without any sense. मुझे अपने बाप को जो तुमको ये मुक्ति देने वाला है, उनको तुम सर्वव्यापी कह देते हो, इतनी गालियां देते हो. Me, the Supreme Father, the bestower of salvation for all, you call me omnipresent. You give me so many insults. कुत्ते में है, बिल्ली में है, मच्छर अवतार, कच्छा अवतार, वाराह अवतार. You say that I'm in the dogs and the cats, that I incarnated in fish, in crocodiles. मानव अवतार, फलाना अवतार. एक तरफ तो कहते हो कि नाम रूप से न्यारा, भाई जन्म मरण से रहते, फिर पतित पावन भी उन्हीं को कहते हो, फिर उन्हीं. Within all sorts of different incarnations, on one side, you say that I'm beyond name and form, beyond rebirth, the one who is the purifier of all. And then to that one, कह देते हो
सर्वव्यापी मच्छ में कच्छ में फलावे में. You say that he is omnipresent, that he incarnates in the crocodiles and the fish, etc. आत्माएं तो जानवरों में भी अपनी है, मनुष्यों में भी अपनी है. ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ये सभी वो उसने रूप धरे हैं. Even for human souls, you say that human souls are their own and the animals have their own souls. You wouldn't be saying that this human soul then became this animal. तो कभी हो ही नहीं सकते हैं ना बच्चे. That could never happen, could it, children? ऊपर चले तो सब भगवान हो जाते हैं और ये भगवान दुर्गति को थोड़ी पाते हैं. नहीं. If God incarnated in everyone, then everyone becomes God. And so then you would be remembering that one. That could never happen, could it? आत्मा ही दुर्गति को पाती है, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है. It's the soul that becomes impure, and it's the soul that becomes pure. आत्मा जब पावन बनती है तो उनको चोला भी पावन मिलते हैं. When the soul becomes pure, it receives a pure body. देखो अभी सब जब ये शरीर खत्म हो जाएंगे, सारी ये मनुष्य सृष्टि, तो जो आएंगे वो फिर सतोप्रधान बुद्धि उनकी होंगी. When this old world ends, then those that will come, they will have these satopradhan intellects. पीछे रज्जो में आएंगे, फिर तमो में आएंगे. सब ऐसे होते हैं, हर एक बात ऐसे होती है. मकान है, देखो नया. They will then become ones with the tamopradhan intellect. This happens with everything. Look at the example of houses. इनको सतोप्रधान कहेंगे. फिर एजेस होती है इनकी. जब आधा होगा तो कहेंगे, पीछे उनके बाद कहेंगे पुराना. When it's new, you would then say that it's new, and then it goes through its ages. So it starts off as satopradhan, and then halfway through you would begin to say that this has now become an old house. तो ऐसे तो सब चीज होते हैं. शरीर है, पहले देखो बालक होते हैं, कितना प्यारा लगते हैं. This happens with everything. Let's take the example of the body. Initially, you start off as a child. So a child looks so lovely. कहते हैं सतोप्रधान अवस्था. You would call that the satopradhan stage. कहा गया ना कि साधु महात्मा लोग और जो बच्चे छोटे होते हैं समान है. Because it's been said that the sages and the great souls and small children are equal to each other. वो भी विकार में नहीं जाते हैं. 5 विकार में बच्चों को भी तो पता भी नहीं है. Because they don't go into the 5 vices, and small children don't even know what the vices are. इसलिए भेंट करते हैं बालक की. And this is why they compare them with children. जब छोटा है, बिल्कुल छोटा, जब सतोप्रधान है, पीछे सत्व बनता है, पीछे रज्जो बनता है, पिछाड़ी में आकर के तमो बन जाते हैं. When they're completely new children. So that stage is known as the satopradhan stage, and then that child becomes sato, then rajo, and then at the end they reach their tamopradhan stage. तो हर एक वस्तु ऐसे जरूर बनती है. तो ये भी तो सारी दुनिया जो है बच्चे, इसको कहे जाते हैं न्यू वर्ल्ड, फिर ओल्ड वर्ल्ड. So everything goes through these stages, and this applies to the whole world, children. Look, it said new world and then old world. ऐसे तो कहेंगे ना बच्ची, सत्य को कहेंगे न्यू वर्ल्ड, यानी नई दुनिया, फिर कलयुग को कहेंगे कि पुरानी दुनिया. अच्छा. You would say it like this, wouldn't you, children? You would say that the golden age is the new world, and you would say that the old world, the Iron Age, is the old world.
अब ये तो भारतवासी तो जानते हैं अच्छी तरह से, बल्कि और भी नेशन वाले जानते हैं। जब भारत नया था तो बड़े ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको ये स्वर्ग, विश्व, हेवन, पैराडाइज, ये सभी नाम रखे हुए ये भारत के ऊपर। हाँ, And the people of Bharat know this very well, and other nations may also know this, that when Bharat was Satupradhan, there was the original eternal deity religion, and it was given the name of heaven, paradise, Bahisht. All of this was in Bharat. अभी भारत वो तो नहीं है ना, अभी किसको इसको कहेंगे कोई स्वर्ग पैराडाइज? Now, Bharat isn't like that. Would anyone call it heaven or paradise? यहाँ दुखी दुख है, तो ये समझ में आते हैं कि जब भारत पैराडाइज है तभी एक ही धर्म है। Now there is nothing but sorrow. And so it's been explained to you that when Bharat was paradise, there was just one religion. अच्छा भाई, और सभी आत्माएं कहाँ है? वो मुक्तिधाम में है, वन। Okay, so then where were all the other souls at that time? They were in the land of liberation. वान धाम में है या वान परस्त में है, जहाँ वाणी का गम नहीं। They were in the land of nirvana, which is also known as the stage of retirement, where there's no sound. क्योंकि उसको कहे जाते हैं साइलेंस वर्ल्ड, Because that place is also called the silence world. शांत, आत्माएं शांत रहती अपने स्व। There's silence. The soul remains silent in its original religion. में रहते, उसको कहा जाता है आत्माएं स्वधर्म में रहते, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। That's known as the soul stabilizing in its original religion, because the original religion of the soul is silence. आत्मा को जब अपने स्वधर्म का पता पड़े तो शांति के लिए धक्का नहीं खाएगा। When the soul knows about its original religion, then it won't be wandering around looking for that. वो समझ जावे को हमारा स्वधर्म शांत है और हमको इन ऑर्गन्स से कहना है, बात करना है, खाना है, पीना है। He would then understand that my original religion is silence, and through these organs I have to speak and do things and eat. हमको शांत में रहना है तो हम अपने को अलग कर देते हैं। And if I want to remain silent, I have to separate myself. समझे नहीं? ओम शांति ऐसे कहते हैं। You understand, don't you? We say Om Shanti, don't you? ओम माना आई एम आत्मा, Om means I am a soul, स्वधर्म है शांति, तो and my original religion is silence. शांति में बैठ सकते हैं, परंतु कर्म बिना तो कोई रह नहीं सकते। So you can sit in silence, however, no one can remain without performing actions. इसलिए आत्मा कब तक शांत रहेगी? लोग यह कर्म करने के लिए आए, ये तो कोई मूल वतन तो नहीं है ना। And so for how long would the soul remain silent? The soul has come here to perform actions. This is not the original home, is it? शांति धाम तो नहीं है जहाँ शरीर होते शांत में रहेंगे, तो हो नहीं सकते है। This is not the land of silence. There is a body here, and so the soul cannot just remain in silence. शांति धाम कहे जाते हैं जहाँ आत्माएं निवास करती है, निर्वाण। The land of silence is known where only souls live, the land of nirvana. अभी आए हम बाप बोलते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको। And so now the Father has come, and he says to us, stabilize yourself within your original religion. शरीरी अपन को समझो। Understand yourself to be bodiless.
अभिमान के बदले में देही अभिमानी भव. Instead of remaining in your arrogance, may you be ones who are free from the arrogance of the body. फिर अपन को आत्मा निश्चय करे तो हे बच्चों तो ऐसे कहेंगे कि बाप हो. And then have faith that you are a soul. And so he says, hey children, the father would speak like this, wouldn't he? बच्चों माना हे आत्मा हो, अब मुझे अपने बाप को याद करो. Hey children, that means, hey souls, now remember me, your father. तो क्या होगा उसका नतीजा? इससे योगा अग्नि से देखो ये योग भारत का प्राचीन बड़ा नामी ग्रामी है. And so what would be the result of that? Well, through this fire of yoga, look, this word yoga is ancient yoga, is very, very famous. परंतु था वो जब फिर वो आगे बाप तब आके सिखला रहे नहीं. But it was there, but it can only be taught when the Father comes to teach it. मनुष्य को नहीं सिखला सकेंगे ना बच्ची. Human beings cannot teach this. No daughter. मनुष्य को कभी भी सदगति नहीं दे सकते जबकि ये है ही पापात्माओं की दुनिया. Human beings could never give salvation to human beings when this is in fact a world of sinful souls. भेद में है नहीं. हाँ बरोबर सतयुग है शिवालय. There's a comparison, isn't there? That definitely the golden age is the temple to Shiva. तो समझाए तो बच्चों को अच्छी तरह से जानना है तो बाप आकर के धीरे देते हैं बच्चों को अभी इस सब. And that's been explained to your children very well, hasn't it? So the Father comes and gives patience to the children. पता बच्चे अभी तुम्हारे सुख के दिन तो आए हैं नहीं. अभी जितना हो सके इतना तुम अपने बाप को याद करो. The children, your days of happiness haven't come yet, and so, as much as possible, remember the Father. And then your final thoughts will take you to your destination. अंत काल जो सिमरे ऐसे चिंतन में जो मरे वल वल जून अवतरे. And it's been remembered that as are my final thoughts in my final awareness, then my future births will continue to be influenced by that, and I'll keep on having that repeated. पुनर्जन्म मिलेगा. अभी बोलता है कि जब ये मृत्यु लोक है बच्चे इसमें तुमको पुनर्जन्म नहीं मिलने का है. That means that you'll continue to take rebirth. However, this is the land of death, and children, you're not going to receive rebirths now in this land of death. अमर लोक सतयुग कहा जाते हैं, इसको मृत्यु लोक कहा जाते हैं. The golden age is known as the land of immortality, and this is known as the land of death. अमर लोक में तुम अमर रहते हो, तुमको अकाल मृत्यु नहीं खाती है वहाँ. In the land of immortality, you remain immortal. That is, untimely death doesn't eat you. समझा ना बच्चे? नहीं, बाप ने समझा नहीं कि वहाँ. You understand, don't you, children? Because the Father has explained. सर्प अपनी पुराने खल को छोड़ नहीं ले लेते हैं, मिसाल तो देते हैं वो उसमें. That it's like a snake who sheds a skin over there. Because that's an example that's given, isn't it, children? अक्कल है नहीं, कितना अच्छा अक्कल है. That snake has so much sense, doesn't it? ले लेते हैं, मिसाल तो देते हैं वो उसमें भी तो अक्कल है नहीं, कितना अच्छा अक्कल है. So there, just like a snake sheds its skin and takes another one, look, that example's given, isn't it, children? And look how much sense that snake has. It has so much sense, doesn't it, children, that it receives a new skin, and so it leaves the old skin.
काल किसके लिए है? ये सतयुग में देवी देवताओं के लिए है. And so, to whom does this example apply? It's for the deities of the Golden Age. जब भी उनका शरीर बुढ़ा होता है नहीं, तब वो जानते हैं कि हम आत्मा को, अभी आत्मा का ज्ञान हुआ है. When its body gets old there, the soul there knows, because there is the knowledge of the soul. ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ज्ञान आत्मा का भी देते हैं, बच्चे तुम आत्माएं हो. They don't have the knowledge of the Father, but this is why the Father now gives the knowledge of the soul, and he says, children, you are souls. बाप एक है और तुम ये जो शरीर है ऑर्गन से इसको कहा जाते हैं कर्म इंद्रिय. The Father is one, and this body that you have, these are known as your organs, your sense organs. इनसे तुम कर्म करते हो, ये कर्म क्षेत्र है. Through which you perform karma. This is the field of karma. समझा ना? इसमें सबको कर्म करना ही है. You understand, don't you? That everyone has to perform karma in this field. शांत नहीं रहना है, नहीं शांत का स्थान ये नहीं है, ये कर्म. You're not to remain silent down here. No, this is not the place of silence. स्थान है, कर्म बिगड़ कोई रह नहीं सकते हैं. This is the place of karma, and no one can remain without performing karma. का संन्यास कोई कर नहीं सकते हैं, समझा ना बच्ची? No one can renounce karma. You understand, don't you, children? कैसे करेंगे कर्म का संन्यास? कर्म का संन्यास तो मूल वतन में होता है. क्यों? They talk about the renunciation of karma, but that only happens in the original land. अकेली आत्मा है, यहाँ किसका कर्म का संन्यास थोड़ी होते हैं. ये भी झूठ बात है जो समझते. Because there is only the soul. Here, no one can renounce karma. That's in fact a false claim. कर्म संन्यासी, कर्म का संन्यास हो ही बच नहीं सकते. तुम शांत. The sannyasi of karma, that cannot happen down here. में बैठ सकते हो अपने स्वधर्म में, उसको कहा जाता है रियल शांति. You can sit in your original religion, and that is known as true silence. ब्रह्म कर करके नाक मूंद करके नहीं, वो तो आर्टिफिशियल हो गई. By taking all these breathing exercises like pranayam, by closing up your nostrils, all of that is actually artificial silence. इसको झूठी कहा जाते हैं. जो प्राणायाम या खड्डे में घुस जाते हैं, ये तो अभ्यास है, समझा? That is in fact a falsehood, because they hold their breath for a long period of time, or they go and sit in a ditch. So all of these things are just things of practice. सब तो नहीं कर सकते ना बच्चे, उसमें माताएं तो कर भी नहीं सके. But not everyone would be able to do this, would they, children? The mothers wouldn't be able to do this. बड़ी डिफिकल्टी है उनमें. कोई प्राणायाम चलाते बुद्धि खराब हो जाती है, माथा खराब. There's a lot of difficulty in that practice, and some of them, by holding their breath over a long period of time, their head gets spoilt, and some of them develop some sort of brain damage through that. नहीं, ये तो बिल्कुल ही सहज है समझने की बात की है मेरे लाडले बच्चे. तुम आत्मा उनका स्वधर्म है ही शांत. But this is something very easy. Hey, my beloved children, the original religion of souls is silence. परंतु शांत जब तुम्हारी स्वधर्म में हो तो घर में रहते हो, वहाँ शांत रहते हो, उसको कहा जाते है शांति धाम. पीछे सत्य को कहा जाता है सुखधाम. Originally you live in silence, and that is known as the land of silence. And then it is known as the land of happiness. बाप आकर करके फिर नई दुनिया को स्थापन करते, तो कभी नई दुनिया स्थापन हो रही है ना, पुरानी का तो.
And so it's the Father that comes and establishes the new world. That's what's happening here, isn't it? That the new world is being established and the old world is being finished. खड़ा हुआ है, गाया भी जाते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना. You are standing in between the two, and it has been remembered that there is establishment through Prajapita Brahma, the father of humanity, Brahma. सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा रहते हैं उन द्वारा तो मनुष्य सृष्टि की स्थापना नहीं हो सकती है. नहीं, The Brahma that lives in the subtle region, the establishment of the human world can't happen through him, can it? तो वो है अव्यक्त ब्रह्मा, तो फिर ये है व्यक्त ब्रह्मा. That one is the angelic, Avyakt Brahma, and this one is the corporeal, the Vyakt Brahma. ये है पतित, तो वो है पावन. जब This one is impure, and that one is pure. पतित पावन बन जाते हैं योग और ज्ञान से, तो फिर वो बन जाते हैं. When this one becomes pure through knowledge and yoga, then he becomes that one. ऐसे तुम भी ऐसे ही हो. And the same applies to you. सुनिए बच्ची, प्रजापिता ब्रह्मा जब यहाँ है तो तुम सूक्ष्म वतन में भी उनके साथ रह जाती हो. तुम You understand, don't you, children, that when the Prajapita Brahma is down here, then all of you also go and live in the subtle region with him. उसका कहा जाता है फरिश्तों की दुनिया. That is known as the land of angels. सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया. The subtle region is the world of angels. दिमाग से नहीं होता है बच्ची, वहाँ सूक्ष्म होते हैं शरीर. There's no flesh and bones there, children. There they have subtle bodies. हाँ, सफेद. तुम लोग ने गोश्त नहीं देखे नहीं? गोश्त. The body is like white. You children haven't seen ghosts, have you? जिसको भूत कहते हैं नहीं, जो जिसको शरीर फट से नहीं मिलता है नहीं, वो भटकते हैं. Ghosts, in Hindi they're called bhoot. They are, when souls can't find another body, they wander around. छाया रूपी उनका शरीर होते हैं. वो देखने में आते हैं जैसे मनुष्य जाता है पर छाया रूपी. Their body is like a shadow, and you can just see it like a shadow, just like when a human being has a shadow. उनको पकड़ो तो पकड़ने नहीं देते हैं, यहाँ तक भी आ जाते हैं. उसको फिर दूसरे अक्षर में गोश्त भी कहते हैं. You can't catch that shadow, and when it comes close as well, you can't notice it. And so that is known as a ghost. कि आत्मा जब तक उनको शरीर मिले तब तक ऐसे भटकती है. That until a soul receives its next body, it can wander in this way. तो वो तो और दूसरी दुनिया उनसे कोई ताल्लुक तो है नहीं इस ज्ञान. Well, that's another world, and it has no connection with this path of knowledge. ये समझाया जाते हैं कि बच्ची तुम अपने बाप को याद करने से क्या होगा, तुम्हारे ऊपर जो विकर्म है वो जल जाएगा. अभी टाइम. But what's explained to you, children, is that as you remember the Father and the burden of sin is removed from your head. अच्छा, ओम शांति.